Hello friends, this is a lecture of class 8 subject maths exercise 17b. Today we will solve our next example of this exercise. So example 4. The statement is construct a rectangle ABCD in which side BC is equal to 5 cm and the diagonal BD is 6.2 cm. मीन्स हमें एक ऐसी रेक्टेंगल ABCD की कंस्ट्रक्शंस करनी है जिसमें साइड्स BC है हमारे पास वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है, उसका जो एक डायगोनल BD है वो हमारे पास 6.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए जो बेसिक कंसेप्ट हमारे पास रेक्टेंगल का वो ये होता है कि उसमें अपोजिट साइड्स जो होंगी वो हमेशा इक्वल होती है, लाइक दिस साइड्स इक्वल टू दिस साइड्स एंड दिस साइड्स इक्वल टू दिस साइड्स एंड ईच एंगल विल बी 90 डिग्री, लाइक this and this is also a 90 degree. So on this basis we will construct this rectangle. So draw BC 5 centimeter, means we have to taken BC is 5 centimeter and the on vertices C we have to draw a 90 degree angle. We can say that CX perpendicular on BC. Now with center B take the radius 6.2 centimeter because this is our diagonal. So take 6.2 centimeter radius and draw an arc which cut this CX at the point D. Clear? Now join to BD. Now with center D take the radius 5 centimeter, draw an arc. Clear? This is arc. Clear? Now with the B as center, now this is the center and radius equal to C to D. Clear? Draw another arc which cut the previous arc at the A. Now join, that is A to B and A to D, which is our required rectangle, that is ABCD. Clear? Now example 5th, construct a square ABCD each of whose diagonal is 5.2 centimeter. मीन्स हमें एक स्क्वायर ABCD कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एक जो हर एक ईच डायगोनल जो दे रखा है वो कितना है हमारे पास 5.2 सेंटीमीटर है। अब देखिए जो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं हम वो अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि जो डायगोनल्स हैं हमारे पास स्क्वायर के वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पर, मीन्स कि वो साइड्स को लाइक 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड भी करेंगे और वो राइट एंगल्स भी होंगे, लाइक ये देखिए हमारे पास यहाँ। सो we have to taken the steps on this basis. Draw AC, means AC taken 5.2 centimeter. Clear? Now draw the perpendicular bisector of AC. This is the perpendicular bisector, like. Clear? Now that is which meeting AC at the point O. Now from O take the radius OB, that is 1/2 half of diagonal, that is 5.2, means that is it will become 2.6. So OB take the O is the center and draw an arc which cut XY along the OY like this form. Similarly OD, this is 2.6 also. Now join, that is AB, BC, CD and DA. This is our required square. Clear? Now is the next question. Construct a rhombus whose with sides 4.2 centimeter and one of angle is 65 degree. Means हमें एक ऐसी रोम्बस कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी साइड्स 4.2 हो और उनमें एक एंगल हमारे पास 65 डिग्री दिया हुआ हो। नाउ देखिए हमारे पास जो रोम्बस है उसका जो एडजेसेंट एंगल का सम होता है हमारे पास लाइक वो 180 डिग्री होता है, बिकॉज 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर लाइक एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन. सो दिस एंगल एंड दिस एंगल सम इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर द कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स. सो देर इज ड्रा BC is 4.2 centimeter. Here is the make angle CBX, that is like CBX is 115 degree and the BCY is 65 degree. First you have to find out adjacent angle. This is 180 minus 65, so it will become 115. Now that is take the radius 4.2 centimeter which is given like so. Along that is the BX and along CD. Clear? Now join A to D. Clear? And rhombus, there are 4 sides and all 4 sides are equal. So we have
taken, like BC is 4.2, so also BC CD 4.2, this is also 4.2, and this is also 4.2. So ABCD is a required numbers. Clear? Now you have to solve the sums from 5th to 8th, means 5th to 8th sums. Only 4 sums you have to solve in fair notebook. Clear? Thank you and have a nice day to all of you.